So good afternoon, everyone. My name is Maurya Hanspal, and here we're gonna continue our sessions on mutual funds. So in this session, I'm gonna talk about the types of mutual funds. So talking about the first type of the mutual fund is the equity mutual fund. So this mutual fund invests a minimum amount of 65%. मतलब 65% equity में वो invest करेगा ही करेगा, and that is the minimum amount. So if someone is investing at least 65% in equity, so it means it's a high risk instrument and that person wants growth with capital appreciation. In case of a debt fund is something which invests at least 65% of its assets in a debt. That is something related to the bonds or debentures that promise you a fixed rate of interest. तो वहां पर भी रिस्क हो सकता है if you are investing into like less than AAA or like plus B securities, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. बट डेट फंड में एक चीज है, इफ यू वांट टू हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड वांट टू प्रिजर्व योर कैपिटल एंड यू आर रिस्क टॉलरेंट पर्सन और रिस्क टेकिंग पर्सन or have a risk taking appetite, then you can do it. Then you have the hybrid fund. So hybrid fund is a mutual fund that invests in two or more asset classes: equity, debt, money market instruments. मतलब इक्विटी में भी वो कर रहा है इन्वेस्ट एंड डेट में भी कर रहा है इन्वेस्ट. ओके, एंड जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट. सो यहाँ पे द पर्सन वुड वांट बोथ द कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ एज वेल एज कैपिटल प्रिजर्वेशन. इंटरवल फंड्स की हमने बात करी है. देखो, लाइक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डेट म्यूचुअल फंड ना, two kinds of risk can be there, okay, which I talk about. One is the interest rate risk and the other is the credit risk. So what is the interest rate risk? Interest rate risk happens basically because of the inverse relationship between the bond prices and the yields. मतलब अगर yields बढ़ेंगी तो bond price गिरेगा, अगर yields गिरेंगी तो bond price बढ़ेगा. That is an inverse relationship between the two. अब now you would say कि अगर yields कम हो रही है, bond price बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? Just assume in your portfolio if you have both equity and debt. Okay, तो अगर debt का प्राइस कम हो रहा है, शेयर प्राइस की तरह देखो, अगर डेट का प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी अफेक्टेड, राइट? If anyone is having whole debt, obviously the portfolio would be like affected a lot if the interest rate goes up. Because if the interest rate or the yields go up, the price of bonds would come down. But on the other scenario, if the yields go down, the price of the bond portfolio would increase. And so like that is like one of the risk. तो तभी बोलते हैं कि try to have a diversification in terms of the asset class also. That is where people go for the multi-asset funds. In a multi-asset fund, equity is for the capital appreciation and growth. Your debt fund is for the capital preservation, and your gold is basically a hedge against inflation. कोई भी recession market में आ रहा है, जैसे like currently we had the Russia-Ukraine issue, तो ऐसे कोई भी geopolitical tensions and all these things में, the gold is a hedge. It's a hedge instrument. So like coming back to the type of risk that we face in the debt instruments. So one risk that we talk about was the interest rate risk. And the second thing that I'm talking about is what is the credit rate risk. So credit rate risk में क्या होता है? If you are investing into the bankrupt securities or those securities whose rating is less than B+. Because there is a kind of rating like which is assigned by CRISIL, the Credit Rating Information Services of India, or ICRA, the Investment Credit and Research Agency, and the CARE, the Credit Analysis and Research. So all these organizations are providing you these details. Okay, so अगर बहुत जाते like if you are investing into AAA or AA or single A, those are the investment grade securities. वहां से return आएगा. But if you are investing into B+ से नीचे, those are the speculative based securities. जिनकी जो मान लो कि credit rating है B से कम, कि B+ से कम है, those are the speculative ones. अब जहां पे ज्यादा रिस्क है तो वहां पे रिटर्न भी होगा, बिकॉज दैट इज द मेजर फिलोसफी ऑफ द स्टॉक मार्केट. हायर द रिस्क, हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लो रेट पेपर्स एंड ऑल, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा एंड वहां पे लाइक यू कैन गेट अ रिटर्न ऑल्सो. ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी शुड बी नोन टू यू. Like when we talk about bonds now, there are two types of things. One is the accrual. When we talk about accrual, and the other is the duration, and on the basis of which the market price of the bond is calculated. So what happens in accrual, if you are like investing in short term securities or to like medium term, तो यहाँ पे जो कूपन पेमेंट मिलता है ना, उसके बेसिस पे द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज कैलकुलेटेड के बेसिस पे. ओके, एंड यहाँ पे ना लाइक देयर इज रिस्क, बिकॉज
यस, देयर इज मतलब कि लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क बोल सकते हैं, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो. तो इफ यू लाइक इन्वेस्टिंग इनटू एक्रूअल बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपको वो पैसा मिल जाएगा, मतलब कि फिक्स्ड. एंड एक्रूअल में क्या होता है, अगर मान लो कि कूपन पेमेंट नहीं मिल रही, तो दैट कूपन पेमेंट गेट्स added on to the principal amount. But in case of duration, it's for the long-term basis and it affects due to the interest rate volatility. Interest rate और yield बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो yield बढ़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्क भी ज्यादा होता है, and these are like for the long-term durations. So that thing must be clear to you, like when we talk about this. So coming back to the slides. Now you have the different types of short debt mutual funds. The one is the short debt funds. Now these short debt funds can be like classified into the overnight funds, your liquid funds, or ultra short duration funds, your low duration funds, and money market funds. So what happens in an overnight fund? It invests in securities with a maturity of 1 day. कि आपने इन्वेस्ट आज करा और कल आपको अपना पैसा मिल गया. बट इन सिक्योरिटीज में क्या होता है, you do not get a rate of interest. उसमें ऐसा होगा, अगर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का बॉन्ड है, they'll give you at 95 रुपीज, तो 95 पे खरीदो एंड 100 पे बेच दो, तो 5 का गेन हो जाएगा, बिकॉज देयर टू शॉर्ट टर्म और इंटरेस्ट रेट की नीड नहीं है. लिक्विड फंड्स है 91 डेज की मेच्योरिटी होती है, शॉर्ट टर्म 91 डेज की मेच्योरिटी होती है, 3 महीने की, एंड देयर यू कैन गेट, मतलब कि 91 डेज मेच्योरिटी का लाइक टी बिल रेट होता है, सो दैट यू कैन गेट देयर. अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का 3 to 6 months का होता है ड्यूरेशन. लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स आर फॉर 6 to 12 months एंड मनी मार्केट फंड्स आर अप टू 1 year, मतलब मिनिमम मतलब कि 1 साल था. एंड मनी मार्केट फंड्स, योर लिक्विड ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, गिव द ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल. दीज आर समथिंग व्हिच लाइक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. अब ट्रेजरी बिल्स की मैं बात कर देता हूँ. See, they are like some of the securities which are issued by the government and which have like backed by the government, जहाँ पे like interest rate default नहीं होगा, and there you get a risk free rate. तो यहाँ पे like you have the government bills जिनकी maturity मान के चलो like very less, ठीक है, up till मतलब कि 1 year तक की. like you have a 91 days bill, a 182 bill and a 364 days bill. then you have notes का from 1 year to 10 years की रहती है duration, and then you have bonds, it is from 1 year to 30 year. सॉरी, नोट्स की फ्रॉम 1 to 10 years एंड बॉन्ड्स की फ्रॉम 10 years to 30 years की रहती है ड्यूरेशन बिल्स इन सबकी. ठीक है, so that is one thing that you need to know. These are some treasury bills or like treasury bills, treasury notes or treasury bonds. People tend to use them interchangeably. But if you are a student of finance and have knowledge into the concepts of finance, you should not use these terms interchangeably and mark a clear-cut demarcation between the two. ठीक है, सो दीज आर, इनमें बोलते हैं कि रिस्क नहीं होता बिकॉज द गवर्नमेंट इज इशूइंग और बैकिंग देम. बट डू यू रियली थिंक रिस्क नहीं होगा? टेल मी वन थिंग, डू यू रियली थिंक रिस्क नहीं होगा? बिकॉज द यील्ड्स गेट चेंजेस, एंड अगर आपने एक गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीदा है, अगर यील्ड बढ़ गई, अगर वो रिस्क फ्री रेट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ बॉन्ड वुड कम डाउन, तो मार्केट टू मार्केट लॉसेस तो हो ही सकते हैं, राइट? और अगर यील्ड कम होगी तो बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो मार्केट टू मार्केट गेन भी हो सकते हैं. So that is something. रिस्क होता है बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट चेंज. अगर आपको टी बिल्स में भी अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है तो वो 6 का हो जाएगा 8, तो इट इज लाइक बेड फॉर यू, इट इज गुड फॉर यू. अगर 6 का 5 हो गया वो किसी रीजन से एंड 6 पे लॉक इन, तो दैट कैन हार्म यू एज वेल. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो देयर कैन बी एन इशू एज वेल. ठीक है, then you have the long term debt funds. अब long term debt funds की corporate ratings AAA, AA. ठीक है, so इसमें क्या होता है, you have like 2 types of long term debt funds. One is the corporate bond fund and the other is the credit risk fund. And these are also the type of the duration funds. There are 2 types of duration fund. One the corporate bond fund and one is the credit risk fund. So corporate bond fund में क्या होता है, 80% आप A या AA प्लस सिक्योरिटीज में डाल रहे हो, एंड क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि 65% एटलीस्ट आप AA से नीचे वाली उसमें डाल रहे हो, मतलब द रिस्की वंस. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एंड द क्रेडिट रिस्क फंड, व्हिच आर